like a trap. It's so nice showing them. It's so nice. Yeah, that's One, two, four. Mano. One, two, three, four, Relax. six. ये सब making सब इसको देखेगा रामन्ना मानसी का face और पीछे इसका Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. एक ज़्यादा हो गया. वो मेरे जो Okay. बना है This is hello. This is your Horoscope. horoscope. इस बार का Huh? कृष्णमूर्ति पद्धति Huh? केपी ये होरा सिस्टम यूज किया. सेम थिंग अल्टीमेटली वो खाली रिप्रेजेंटेशन है. इमेजिन 8th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस. I would have seen at least 10,000 plus horoscopes. One thing we find common. Every person, it does not matter कि भिखारी है या बिलियनर है. Every person generally has, or some people at the beginning of life, some people at the end of life, depending on how your planets are placed. Every person has either a great planet in the 8th house, which is the house of death, birth, rebirth, transformation, transcendence, miracles, healing, alternative healing, alternate surgery. 8th house is one of the largest house. Okay? या तो यहाँ पे एक आधा ऑप्शन दिया रहेगा तुमको. अगर 8th हाउस में पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं, तो यू विल फाइंड सच पीपल गोइंग इनटू द डार्क आर्ट्स आल्सो. ओके, यू विल फाइंड देम हेलुसिनेटिंग और डूइंग सम ब्लैक मैजिक, वुडू, ये वो. यू विल फाइंड देम टेकिंग अ सिली पाथ saying नो नो एंजल्स एंड डीमंस एंड स्टफ लाइक दैट. तो वो ऐसा कुछ ना कुछ पाथ स्पिरिचुअलिटी का एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहां से वो एनलाइटनमेंट तक पहुंच सकते हैं. द 9th हाउस इज द हाउस ऑफ द गुरु. house of a Guru. okay. In general, I have always found that most people also probably end up having a good planet out here or another planet coming from, let's say, 4th house or something, going into the 9th house, but it's a larger planet, so it will stay there for 10, 15, 20 years. Okay. Like a Neptune or a Saturn or a Pluto or a Uranus. And they will find a guru. Okay, and these people will end up in a lineage of sorts. Okay, an authentic lineage, not the Shri Shri Ravi Shankar or Sadguru lineage. They are never not criticizing. They are the kindergartens. Their job is to teach you ABCD. Their job is to teach you कि भाई पद्मासन में कैसा बैठने का, सिद्धासन में कैसा बैठने का, वो ये आसन कैसा करने का, ईड़ा क्या है, पिंगला क्या है. Their job, they invest a lot of time, money, effort to toilet train you, that when you actually do end up meeting a real master or a guru in person, he does not have to start with teaching you ABCD. He will then start कि भाई ईड़ा चालू करो, पिंगला चालू करो. That's how I will start my class. You cannot really expect me to explain to you कि अरे ईड़ा क्या है, पिंगला क्या है, incoming क्या होता है, outgoing क्या होता है. Not possible, not my job. Okay. For that I insist upon people कि देख भाई वो विपश्यना, सदगुरु, श्री श्री कुछ किया है तो ही मेरे वर्कशॉप में पहुंचना, वरना मत आना, सब ऊपर से जाएगा. करेक्ट. People who have a good planet in the 9th house will end up finding generally a right guru, a right guide in their lives, who will take them, walk them through a particular spiritual path and can help them enlighten immediately. Okay. 12th house. 12th house is the house of ashram, water bodies. 12th house is the house of enlightenment, moksha, mukti, nirvana, liberation, renunciation.
release of all attachments, okay, and for working from behind the scenes, okay. Most people will have one of the planets either in the 12th house, either in the exaltation or in the deepest debilitation, okay. In my case, I will share, I have one of the most powerful planets called Kubera. Kubera is the lord of wealth. I have it debilitated, deepest debilitation in the 12th house. 12th house is also the house of death. Okay, 8th and 12th are house of deaths. They are the house of losses. I have a Kubera deeply debilitated in the 12th house. This Kubera, when it was traveling through my 8th house, okay, it was fully exalted. माने exact opposite. फुल एक्सॉल्टेशन, बट मेरे 12th हाउस में डेबिलिटेड है. तो होता क्या मालूम, मैक्सिमम लॉसेस, माने उल्टा कैची गलती से पकड़ा और तोड़ दिया पूरा मार्केट, ऐसा वाला फ्री फॉल, ठीक है. बट आई ऑल्सो हैव माई सन मर्क्यूरी एंड वीनस इन द 8th हाउस. all of them in what we call as a fall. That combination, when it came together from 2011 to 2016, and when Kubera reached its deepest debilitation point around November 2012, is exactly automatically when enlightenment happened. Okay? Because enlightenment is actually losing your nature, it is losing your mind act, it is losing who you are, it is losing your fear, your anger, your anxiety, your guilt, your whatever. So when it reaches the deepest point is exactly when you will find an incidence where you will lose. अब एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर को दिखाओगे ना, बोलेगा अरे पूरा ये तो कंगाल हो चुका होगा, एंड लाइक क्या 2011 से 2016 तो प्रिंटिंग प्रेस खोल के बैठे थे हम. Their interpretation is wrong. What it did take away, it took away all these emotions. It transformed. 8th house is also the house of transformation. Okay, it is also a house of rebirth and great comebacks. Okay, and that is exactly what happened. Now, after going through more than 10,000 plus people's horoscopes, I have observed कि 8th house, 9th house या 12th house में हर किसी को उनकी लाइफ टाइम में एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी दिया रहता है. वो भी छोटा मोटा साल 2 साल का नहीं, मिनिमम 7 से 16 साल के आसपास का अपॉर्चुनिटी लोगों को, हर इंसान को मिलता है. एंड दैट इज द टाइम व्हेन दे विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट पेरिफेरली. पहले वो एंजल के वर्कशॉप में जाकर आएंगे, ठीक है, उसके बाद वो बीड माला के वर्कशॉप में जाकर आएंगे, उसके बाद दे विल ट्राई सम नॉर्मल सिंपल योगा, आसन, प्राणायाम. For 2-3 years they will stick with that. Then again self-realize कि यार no, but this is not taking me there, correct? So they will probably start reading into someone. They may find Eckhart Tolle suddenly and ये क्या बोल रहा है, correct? ये मेरा गुरु तो कुछ बोलता ही बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? So that is how their evolutionary process starts, and that is how each human being will go and find and complete their karma, find that master, that guru, guide, whoever he is. And that is how these things work. Okay? Now, is everything predestined? Yes. Yes. But the moment you enlighten, 12th house, moksha, nirvana, freedom, liberation, वो जैसे ही हो जाता है तो वी से हो गया, अभी इस कुंडली को फाड़ के फेंक दो. बट दैट चॉइस टू क्रॉस ओवर इज इन योर हैंड्स, एंड दैट इज द ओनली फ्री विल. Okay. I can evolve more. The only free will that every human being is actually provided is acceleration into self-realization, because that is the only free will. Okay? Rest, everything in your life is absolutely fixed. If you are born in so and so family, you have so and so ailments or diseases, वो सब कुंडली में दिखता है. तुम इतना ही कमाओगे, यही बिजनेस करके कमाओगे, दूसरे लाइन में जाने की कोशिश करोगे, सर के बल गिलोगे, वो सब चीज फिक्स्ड है. Those things generally do not change. Bottom line,
कितना भी होम हवन करवा लो, कौन सी भी अंगूठी पहन लो, सर पे मुकुट बांध लो, वो बदलने नहीं वाला। अगर वो तुम्हारी डेस्टिनी में नहीं है, नहीं होगा। ओके, नथिंग अगेन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आई कीप इंसिस्टिंग दिस, नथिंग इज राइट और रॉन्ग। व्हेन आई से एक्सॉल्टेशन, इट मीन्स कि बॉल ऑफ लाइट इज ओवर ब्राइट, एंड व्हेन आई से डीपेस्ट डेबिलिटेशन, वो इतना डिम हो गया है कि वो ना के बराबर उसका इंफ्लुएंस है। करेक्ट? दैट इज ऑल इट इज। यिन yang, एवरीवेयर देयर इज yin yang, एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, बीच में फॉल। ओके, दैट इज हाउ इट इज। So that's the only free will when you reach the 12th. No, no, 8th, 9th, 12th. 12th. Spiritual evolution is the only free will. Okay. So your If you choose to exercise that free will and you cross over, then the whole chart, Changes. तुम उसको फाड़ के फेंक दो, because now you have crossed over, now everything is free will. Okay. Then you can change, not completely. Okay, but you find a natural destiny. I'm like, okay, these areas of businesses will suit me, so I should stick to these. Okay, जैसे last night or day before, me and Vijay started talking. Vijay like, तू real estate में भी तू क्यों invest नहीं करता है? I'm like, मेरा 4th house बहुत powerful है. I have studied real estate as a super specialization subject because I understand it too well. I was very casually open. Like, मैं हाथ भी नहीं लगाता प्रॉपर्टी को. Correct? Why? Because I will choose as per choice only what resonates with my overall path, life path, destiny, natural destiny. Getting this? Free will है. किस चीज में free will है? Only in spiritual evolution. Okay, got it. बाकी कोई चीज में फ्री विल नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली लिखा है कि भैया तुमको ये बीमारी आने वाली है, हॉस्पिटलाइजेशन है, तुमको कोरोना होने वाला है, 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट छोटा मोटा नेगेटिव में बैठा हुआ है, ठीक है, कोरोना होकर ही रहेगा। मेरा कोई भी नहीं बैठा था, पहले दिन से अपन एकदम 56 की छाती लेकर घूम रहे थे, मालूम ही नहीं होने वाला है। करेक्ट? छोटे से छोटा चीज यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, बड़े से बड़ा इवेंट्स यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर सो मेनी मंथ्स अगो आई हैड सेड सुनामी आ सकता है? कितनों Every wave is going, आपने बोला that इट everything इज एक्सपैंडिंग। so it's like layers of waves riding on each other from smallest to infinitely large. ऐसे ही कुछ आपने बोला। परफेक्टली राइट। तो वो बाइनरी कहाँ है? What does binary come from originally? Is what is called as Fibonacci wave patterns. Fibonacci numbers. नंबर बता। Fibonacci numbers. It is called a Fibonacci spiral, right? 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, उसके बाद एक 1 बीच में एक्स्ट्रा आता है कि नहीं आता? आता है ना? That extra 1 is that expanding spiral. Got it? Yeah, I don't. Fibonacci. So spiral with the numbers that you see that कल भी दिखाया था, मैं फिर से तेरे को समझाता हूँ। Okay. Three is the rising wave, 2 is the collapsing wave. करेक्ट? ये हो गया ब्रह्मा। हर भाषा में खाली लेबलिंग अलग है, वो लेबलिंग तुम लेबलिंग तुम्हारा लॉजिक लगा लो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, this one extra is your 1. This point is the shunya point, 0. This point here is also the shunya point. Now you got 0 1, correct? But this differential 3 rise हुआ और 2 fall हुआ, एक जो बच गया, this is what sustains as a magnet the next arising wave. Correct? Getting this? Vishnu or Neptune is Vishnu. He is the Lord of sustenance. Okay? He is the silent observer that we all keep talking about. Become a silent observer. Correct?
जो शास्त्र में हर चीज बताई है, people we pray to Shiva. Shiva is Pluto as a planet. We pray to him because we do not understand him and we fear him. Is he the Lord of destruction? Yes. But he is also the Lord of generation. Okay? He generated Corona. So when Pluto entered Capricorn in November 2019 is exactly when coronavirus, because he's the Lord of destruction. So he created something, and Pluto is en masse. People keep asking, what is en masse? Like, अब समझ में आया, en masse पूरी दुनिया को affect कर दिया. Something which affects all of us is also governed by Pluto. Mobile phones, not only in America, in India also, right? Pluto, but with combination of Uranus, technology and en masse. If you want something huge, humongous, you need to have a great Pluto or a Neptune or a Kubera in your life. ये तीन जो है, ये उपग्रह है. इसके बारे में इंडियन एस्ट्रोलॉजी में कोई बात ही नहीं. एक साइड, जबकि पराशर, the father of astrology, his entire works predominantly spoke of these upagrahas, but that was completely discarded. So upagrahas are your Uranus, your Neptune, your Pluto, Chiron, Kubera, Kamadev, Prajapati. These are the 7 upagrahas. 7 grahas, 7 upagrahas. So 14 hua and Sun Moon. So 16. 16 planet astrology is what I follow. Yesterday Vijay said something, a silent master. And I'm like, yes, okay. Different expression. Truth, exactly the same. Went completely silent. I'm like Neptune dominant, silence, and Pluto even more dominant. उनको रोमेटाइड आर्थराइटिस हुआ. प्लूटो का वन सारे. प्लूटो अगर डेबिलिटेड है, प्लूटो का एक एक स्थान में 16 से लेकर 30 इयर्स है. 2 बैक टू बैक नेगेटिव हाउसेस में घूम गया तुम्हारा प्लूटो, तुम्हारा जिंदगी खत्म. करेक्ट. Then something what Vijay said, so what you are speaking is, no other master is even close to speaking this. I exactly know what planets are. I have a fantastic Neptune, I have a fantastic Jupiter, and I have a very marvelous Uranus. Indra is the lord of medicine. Indra gave these sciences, all the esoteric sciences, from gods to humans. Okay, I have a fantastic Uranus placed in a particular position, which is a connection of 6th and 8th house in my case, which is why medicine, which is why microsurgery, acupuncture, okay, which is why I am able to talk on psychology also, because my Uranus is sitting in my 3rd house in my natal chart. ये सब जब देखते हो, that is why each expression is very different. And how do you know what are your planets? I keep getting confused. किसी मैं तो बना के नहीं दूंगा. I need your date of birth, place of birth, time होगा. हाँ, मैं वो घर पे वो रात को जब मैं एकदम फुर्सत में बैठता हूँ ना, तभी बनाता हूँ. बाकी see, again and again, I keep insisting to people कि ये जो है वो है. Don't keep coming back to me. ये होगा क्या, वो होगा क्या, नहीं होगा. कभी मूड खराब रहेगा तो सीधा बोल दूंगा होएगा ही नहीं, जा जो. And I know कि you will carry it as a frequency, तो नहीं होगा, होने वाला होगा तो भी नहीं होगा. Okay. What am I generally always interested in is knowing who you are, what is the puzzle to be solved in your life, and are you making genuine effort in the right spiritual direction. Okay. That is all. I am always generally interested in that. The only reason why I went so deep in learning astrology was again to diagnose कि there are some patients, इसको ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, इस पे यही बीमारी है, क्लिनिकली वही बोला गया है,
इसको साला 3 हफ्ते में रिजल्ट आया, इसको कर रहा हूँ वही चीज कर रहा हूँ, इसको 12 महीने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया, क्यों? Is my medicine wrong? Is my diagnosis wrong? What is wrong? What is it wrong that I am doing with her which I am not doing with her? Charts. That is where I started discovering, अरे साला किसी का जुपिटर कोई नेगेटिव हाउस में गया, जुपिटर 1 साल 1.5 साल करता है, ठीक है साल भर के बाद तुम्हारा जाएगा, तब तक पैकेज ये है साल भर आते रहना, ठीक है। अगर किसी का प्लूटो गलती से कहीं पे डेबिलेट हुआ है, वो हाउस में वो बीमारी है, वो डिग्री से वो डिग्री तक अगर वो दैट पर्सन इज सपोज टू सफर, और इफ द पर्सन इज सपोज टू सफर दैट ब्लडी 30 years, then I have to tell that person, look, this ailment we can manage naturally with so and so, you will have to be on this. Okay, that is the reason why I started going into the charts. So basically you'll have to suffer, just the degree of the suffering can be managed by. Yes, because everything is frequency, and I think you were not there. This frequency you are receiving from the astral body, which is creating chronic gasiness and constipation and bloating. Not वो planet से नहीं होता है, but let's say you suddenly start suffering burning foot. कुछ नहीं था कल तक, आज अचानक से एड़ियां दर्द कर रही। This frequency is causing that imbalance in your body. In which case I may use either sound or acupuncture or a pill to create the same frequency over here. When this hits and this when two waves collide, they cancel each other out and it creates silence. And the moment silence is attained, there are no symptomologies. Correct? Can it come back? अगर ये शनि है तो 4-5 साल 7 साल एक घर में बैठा रहता है। अगर ये खायरॉन है तो वो 6-8 साल एक घर में बैठता है। अगर ये प्लूटो है तो 30 years एक हाउस में बैठता है, ठीक है। इन विच केस यू विल हैव टू बी पुट ऑन, जब तक उसका वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम इम्पैक्ट है तब तक वो चालू रखना पड़ता है। अगर देखते हैं कि नहीं यार ये छोटा मोटा है, 3-4 सेशन में ये क्लियर होता है, नथिंग टू इट, so then it is okay. Okay, getting this? That is also the reason why there are so many symptoms which come and go away, because it may be coming because of a Mercury or a Venus which is एक महीना हर घर में रहता है तो वो घूमता है। जैसे me myself, I know for the last 5 to 6 years, end of May कुछ भी हो जाए, नो गुड रीजन, मेरा राइट माउथ, डॉक्टर गणपत किधर गया, इधर ही होगा, राइट लेग में नो गुड रीजन। मेरे को मालूम रहता है, मेरे को तो अभी दिमाग में भी ऐसा मालूम है कि अभी आएगा किधर ना किधर, आगे पीछे 2-4 दिन आगे पीछे। राइट लेग में नी में पेन आएगा, फिर साइटिका तक जाएगा, पूरा पांव लॉक हो जाएगा, चलने को 6-7 दिन चलने को नहीं हो पाएगा, एक्सक्रूशिएटिंग पेन। आई नो दैट विल हैपन एवरी एंड ऑफ मे फॉर अभी 4 साल हो गया और 2 साल बाकी है, वो होने वाला है, वो मेरे को मालूम है। आई नो द ओनली थिंग दैट आई हैव टू बी केयरफुल बिकॉज आई नो इट्स इम्पैक्ट, आई नो द सिवियरिटी ऑफ इट। Either I can meet with a major accident and have multiple fractures and suffer for life, or keep managing it naturally. वो पेन सामने से इन्वाइट करके हम लाइक मई महीना गया नहीं, अगर आया नहीं है ना तो मैं ढूंढ के थोड़ा मार, तो पहले से नीडल मार, because that pain negates. What it is when you are supposed to suffer something, if you consciously go and do it, कि आ बैल मुझे मार ले मुंडी नीचे करके, तो द इम्पैक्ट यू हैव टेकन द पावर अवे फ्रॉम द ओपोनेंट। ओके,
suffering, physical pain is a method of, that is why in our cultures we have that process of penance. They suffer. Why? You are taking away something which will either impact you more negatively, but now you are already prepared. So तुम सामने से you can ask गणपत blindly. हर मेंढ में गणपत किधर गया? पानी पी रहा है। अच्छा. But Siddhi, can you not avoid it? You are an enlightened master. I mean, you What can. did I say? Certain physical, as long as you have the physical body, हाँ, control, he has Then- control. मर्द को दर्द नहीं होता होगा, ठंड लगती है. It's like that. If physical body है तो it is bound to be influenced by external pathogenic factors. Getting it? तो उतना तो होगा. Impact is 95% lesser. 5% impact obviously is supposed to be there. And even if you discard it, there is no fun. There is no fun. गणपत हर मेंढ में पाँव पकड़ते हैं. But isn't कितने साल से, 3 साल 4 साल से तू देख रहा है? But isn't it like, sometimes then by thinking about it, like they say that you're manifesting it, when you're constantly thinking that it's coming, it's going to come, and then... No, I'm not in fear. No, about- not fear. I'm saying, isn't it that you are kind of, in a way, trying to attract it? Because that's what they say, na, that by thinking something like that, Yeah, thinking... law of attraction. So that is law. That's, if you personally ask me from what I am talking, law of attraction बहुत पपलू चीज है. Sorry, it doesn't work that way. The law of attraction, the way how the West has interpreted it, it just does not work that way. Okay, by thinking about something, are you attracting it? Yes, in certain manner, but not necessarily. It is how you are processing it. Are you processing it with a negative emotion, as a fearful emotion? Oh, is it going to come? Or are you actually calm, composed and well prepared? बैल मुझे मार, मेरे को मालूम है ये होने वाला है. It's like, let's say if I'm batting, should I be fearful कि ball मेरे को लगेगा? No. Technically no. Shot number. What is the probability that it will actually hit me? 50-50. Correct? That is exactly how most of these things are. But a batsman is prepared, right? When you are prepared for something, when you have accepted, okay, yes, this is the truth. I know a particular planet comes into a particular degree of exaltation at the end of May every year, and it goes and sits in my house of right leg. Okay? और वो अफेक्ट करता है एवरी ईयर. वो एंड ऑफ मे में 5-6-7 दिन का तकलीफ मेरे को होता है. वो होना है, एज आई सेड, कि वो और 2 साल तक होगा. आई हैव फुल्ली एक्सेप्टेड. आई कैन लिव विद दैट. व्हाट कैन आई नॉट लिव विद? अ मेजर एक्सीडेंट विच कैन cause multiple fractures and then putting all the rods and stuff. That I don't want to. In which case I am ready to experience that pain, suffer and go through a similar pain today. I am dissipating it. वो कैसा है कि उसके गुब्बारे में वो तभी आके मेरे सर पे फूटे, उसके पहले ही 4 नीडल मार के उसको ऑलरेडी डिसिपेट करते जा रहा हूँ. Getting this? वो इफेक्ट इतने हाई लेवल पे नहीं होता. करना है? चलो लेट जाओ. हाँ? करना है? लेट जाओ, चलो फटाफट. वो पानी पूरी के बाद